Welcome to my YouTube channel. Hello friends, welcome back. So here's my new lecture and the topic is oogenesis. So let's start in detail about this process, that is oogenesis. So what is oogenesis? Well, the primary sex organ in females is ovary and it is present in pair. So it is a paired structure, and this primary sex organ, it produces a female gamete, and this female gamete is ovum. So basically this ovum is produced by this ovary. So the process of formation of the mature female gamete, that is ovum, is known as oogenesis. The question arises that oogenesis is different from spermatogenesis. Well, genesis का मतलब होता है formation. So O मतलब ovum का formation. Ovum के formation, ovum is what? It is a female gamete. While spermatogenesis जो है, genesis means formation and sperm का formation. Sperm जो होता है वो that is a male gamete. So males के अंदर होती है spermatogenesis and oogenesis जो होती है वो females के अंदर होती है. So जो sperm की production है वो males के अंदर शुरू होती है at the puberty stage. While जो ovum की production है फीमेल्स के अंदर वो तब कब शुरू होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. दैट मीन्स कि व्हेन द बेबी गर्ल इज इन द मदर्स वूम उसी टाइम पर ही oogenesis शुरू हो जाता है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस. और अगर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो नहीं देखी मेरी प्रीवियस वीडियो, सो गो ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड प्लीज चेक ऑन दैट वीडियो. So oogenesis initiated at embryonic development. That means when the baby girl is in the mother's womb, at that time oogenesis begins. So what happened then? In the ovary, in each ovary, I told you earlier that ovary is in pair. So ovary is a paired structure. So in each ovary there is a formation of gamete mother cells which are also known as oogonia. So these oogonias are formed in each ovary, and these oogonia gamete mother cells are diploid in nature and contain 46 chromosomes. So in each ovary, in both the ovary, millions of these gamete mother cells form, and when the baby girl is parturited or delivered, जितने ओगोनिया बनने थे वो बन जाएंगे. आफ्टर दैट बर्थ होने के बाद, डिलीवर होने के बाद बेबी गर्ल के अंदर कोई ओगोनिया नया नहीं बनेगा. सो नो मोर ओगोनिया इज एडेड आफ्टर बर्थ. जितने ओगोनिया बनने थे वो बिफोर बर्थ बन जाएंगे. उसके बाद एक बार बर्थ हो गया तो नया ओगोनिया कोई भी ऐड नहीं होगा. सो दिस इज द थिंग. Now, these gamete mother cells or oogonia, they starts dividing. After the birth of the baby, they starts dividing and enter into prophase 1 of meiosis 1. So, ये जो गैमेट मदर सेल है उसका काम क्या है? गैमेट फॉर्मेशन करना. एज यू नो कि गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो मियोटिक डिवीजन करके बनते हैं. सो दिस गैमेट मदर सेल ये मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोसिस 1 करेगा, और मियोसिस 1 के प्रोफेज फर्स्ट में जाके क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा. सो प्रोफेज 1 में जाके ये अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 1 के, टेम्पररी अरेस्ट होगा बट, एंड देन जब ये अरेस्ट हो जाएगा प्रोफेज 1 स्टेज में जाके तो वो गैमेट मदर सेल और oogonia क्या बन जाएंगे? प्राइमरी oocyte बन जाएंगे. So they become primary oocyte which is also diploid in nature and contains 46 chromosome because prophase 1 में ही arrest हो गए, उन्होंने अपनी meiotic division complete नहीं करी है. So what happens next? Now these primary oocyte which is diploid in nature and contains 46 chromosome, they got surrounded by a layer of granulosa cells. So after the oogonia become the primary oocyte, then they develop a layer of granulosa cells. So here you can see that this is the primary oocyte and बाहर देखो एक लेयर आ गई है granulosa cells की. So primary oocyte जो हो गया वो प्राइमरी फॉलिकल्स. सो जैसे ही एक लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की प्राइमरी oocyte पे, वो बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल. सो बेसिकली प्राइमरी oocyte किसके अंदर आ गया? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आ गया. सो दिस इज प्राइमरी फॉलिकल. अब होता है क्या कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होता है? दीज आर मिलियंस.
As I told you earlier that there are millions of oogonia cells in each ovary. So वो जो millions of oogonia cells थे वो primary oocyte बने, then उनके पास क्या develop हो गई, primary follicle develop हो गई. अब ये कुछ इनमें से कुछ क्या होता है, मतलब कुछ नहीं बल्कि मैं कहूँगी most of them. So most of them degenerate. तो birth से लेके puberty तक ये degenerate होना start हो जाएंगे, and जो degenerated primary follicles हैं उनको बोलते हैं follicular atresia. And these follicular atresia, that is the degenerated primary follicles, they got phagocytosed. So they got engulfed by the process of phagocytosis. So the rest or the remaining of the primary follicles, so only about 60,000 to 80,000 primary follicles are left टिल द प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी तक सिर्फ मिलियन से शुरू हुई थी कहानी, और मिलियन से शुरू होने के बाद अब सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचेंगे टिल प्यूबर्टी, एंड वही एंटर करेंगे प्यूबर्टी स्टेज के आगे वाले फेजेस में. सो एट प्यूबर्टी only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. So with the onset of puberty, what happens? These left primary follicles, they begins to mature, and more granulosa cells layer are added. As you will see here, this is primary oocyte. There is a one layer of granulosa cells, एंड दिस इज प्राइमरी फॉलिकल. अब ये एंट्री लेगा कहाँ पर, प्यूबर्टी की स्टेज में आ गए हैं. फीमेल जो है वो प्यूबर्टी की स्टेज में आ गई है. अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स था वो मेच्योर हो जाएंगे, और अब वो क्या करेंगे, अब वो एक और लेयर डेवलप कर लेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स की, और फिर क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल. सो यू कैन सी दैट प्राइमरी oocyte इज विद इन दिस सेकेंडरी फॉलिकल. So this secondary follicle soon transform into tertiary follicle. So secondary follicle matures to form tertiary follicle with a fluid-filled cavity called antrum. You see here, this is primary oocyte within the tertiary follicle, and more granulosa cells layers are added here, and there's a cavity, there's a fluid-filled cavity. This is known as antrum, and the fluid inside this cavity is liquor folliculi. Well, this antrum is a piscine shape structure, and with time this antrum enlarges. So when this primary oocyte within the tertiary follicle, it matures more, this antrum enlarges more. With time, the primary oocyte within the tertiary follicle, it grow in size and complete its meiosis 1. So basically I told you earlier that ओगोनियल सेल्स अरेस्ट हो गए थे प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में टेम्परली, एंड देन दे बिकम प्राइमरी oocyte. फिर आफ्टर द मैच्योर फिर क्या हुआ, देन क्या हुआ था कि वो प्राइमरी oocyte में चेंज हो गए थे आफ्टर बर्थ. फिर क्या हुआ था, उनके बाहर एक लेयर आ गई थी ग्रैनुलोसा सेल्स की, तो वो बन गए थे प्राइमरी फॉलिकल्स. फिर और मैच्योर हुए तो 2 लेयर्स आ गई, फिर और मैच्योर हुए तो बन गए सेकेंडरी फॉलिकल्स, एंड देन और मैच्योर हुए, देन टर्शियरी फॉलिकल्स बन गए, एंड टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या आ गया, एंट्रम, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी आ गई. एंड नाउ व्हाट हैपन कि जो प्राइमरी oocyte था विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, अब वो बड़ा होना शुरू हो गया और उसने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली. बट जब वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो जो डिवीजन होगी यहाँ पर वो अनइक्वल डिवीजन. यूजुअली क्या होता है कि जो दोनों डॉटर सेल्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल साइड, बट यहाँ पर क्या होता है कि अनइक्वल डिविजन्स होती हैं. सो होगा क्या, ये जो प्राइमरी oocyte था ये क्या करेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा, और जब कंप्लीट कर लेगा तो फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा, एंड इसकी डॉटर्स का नाम क्या होगा, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी. सो दिस टर्शियरी फॉलिकल नाउ बिकम्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. सो you can see here secondary oocyte बना within mature graphian follicle. So this primary oocyte divides, और ये बना यहाँ पर secondary oocyte, और एक polar body थी, ठीक है, polar body बनी, and ये जो tertiary follicle था वो mature होकर क्या बन गया, graphian follicle. And both the structures are haploid in nature and contains 23 chromosomes. Okay. So this secondary oocyte within the mature graphian follicle, it undergo meiosis 2 and completes its meiotic division 2, and this secondary oocyte now becomes ovum in the mature graphian follicle,
and one polar body is formed which got degenerated. So the ovum within mature Graafian follicle, you can see here, this ovum forms a new membrane known as zona pellucida. So this layer outside the ovum is known as zona pellucida, and it is composed of glycoproteins. So it is made up of glycoproteins. Later on, a new layer is formed known as corona radiata. So zona pellucida के बाहर एक और layer आ जाएगी ovum के, and that layer is corona radiata, जो कि 2 से 3 लेयर्स होंगी सेल्स की, जो कि अटैच होगी जोना पैलिसिडा से. एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी वाइटल्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, ये ओवम को सप्लाई करता है. कौन? कोरोना रेडिएटा. सो ओवम के बाहर जोना पैलिसिडा, और जोना पैलिसिडा से कौन कनेक्टेड होगा? दिस कोरोना रेडिएटा. सो नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ LH hormone, that is the luteinizing hormone, this ovum is released out. Okay, so the ruptured part, this mature Graafian follicle, it ruptures and releases the ovum. The ruptured Graafian follicle is known as corpus luteum, and ovum is released. And the process of release of ovum from the ruptured Graafian follicle is known as the process called ovulation. So the ovum got released. So now the mature female gamete forms. That is the process of oogenesis. Here stops, because the motive of oogenesis is the formation of ovum. Okay, and the ruptured Graafian follicle is, which is known as corpus luteum, it secretes the progesterone hormone. So this is all about the topic. Thanks for watching. If you like this video, subscribe, share and like this video. Thank you so much.